Beauty. Yes, Beauty. Tell me the name of meaning of these words. सर इनेट मतलब फ्रॉम बर्थ हम गेन करते हैं उसे, एक्वायर्ड मींस हम अपने लाइफ टाइम में गेन करते हैं। करेक्ट। एक्टिव जो हमारी बॉडी खुद हमारे अंदर बनाती है, एंड पैसिव अगर हम रेडीमेड सप्लाई करते हैं तो। ओके। वर्तिका, वेट वर्तिका, वर्तिका एंड पलक। वर्तिका, रेज योर हैंड वंस अगेन so that you can come on my screen. Okay, वर्तिका। यस वर्तिका, अनम्यूट योरसेल्फ। फिर से बताइए एक बार, ठीक बताया इसने। सर इनेट जो होता है वो बर्थ में होता है और वो नॉन स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड जो होता है वो इनेट में इस वर्ड को याद रखेंगे। वेट थोड़ा बीच में मैं भी बोलूंगा। इनेट में इसको याद रखेंगे कि इनेट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक वर्ड का मतलब मैंने बताया था। वेट करो आकृति। यस, नेक्स्ट। और एक्वायर्ड जो होता है वो बर्थ के बाद और वो स्पेसिफिक होता है किसी एक पैथोजन के लिए। और एक्टिव जो होता है वो एंटीबॉडी जो हमें इम्यूनाइजेशन प्लान से उपलब्ध होती है और हमें बॉडी जो करती है। और पैसिव जो होता है वो रेडीमेड एंटीबॉडी जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन होता है वो। करेक्ट। जो कोविड का वैक्सीन लग रहा है वो इन चारों में से किस में रखोगी तुम उसको? एक्टिव। वाई? सर क्योंकि हम लोग उसको इनएक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं और जब हम अपने बॉडी में ले रहे हैं तो वो उसके जो हमारी बॉडी है उसके लिए एंटीबॉडी बना रही है, इसलिए तो वो एक्वायर्ड में नहीं रख सकते क्या उसको? एक्वायर्ड में रख सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से हेल्पफुल नहीं है। अभी तो 98 एंड 90% नहीं, मान लिया अगर सपोज वी आर knowing that it is providing full protection, मान लिया हमने it is providing full protection, then can we keep it in this heading acquired? और भी कोई अगर इसका आंसर बता सके तो raise your hand. yes, आकृति बोलिए। नो सर, इसको एक्वायर्ड में हम लोग नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल है ना, ये हमारी बॉडी में जाएगा फिर एक्टिवेट होगा। ये पहले से ही एक्टिवेट नहीं है और ना ही हम इसको अपनी बॉडी में गेन कर रहे हैं, इसको दिया जा रहा है। यस ब्यूटी। तो इसको रख सकते हैं एक्वायर्ड में, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम जब प्राइमरी रिस्पांस होगा, जब फर्स्ट टाइम किसी भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो, एंड सेकेंड टाइम हम सेम वैक्सीन को अगर लगाते हैं, कोविड वैक्सीन को, तो उसका हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बनती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसलिए सही है कि हम इसको एक्टिव में तो रखेंगे ही और हम इसको एक्वायर्ड में भी रखेंगे। इसलिए देखा होगा अगर बुक में हम चलेंगे, व्हेन वी विल सी इन द बुक, तो इन दैट बुक ऐसा डायग्राम जो अभी तुम्हारे स्क्रीन पे अवेलेबल है, ऐसा डायग्राम बुक में नहीं अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी के ये 4 पार्ट नहीं है। इम्यूनिटी के बेसिकली 2 पार्ट है, इनेट और एक्वायर्ड। ये किस बेसिस पे है? Immunity is divided in 2 parts on the basis of present from birth or acquired after lifetime, or we are gaining after lifetime। और ये किस बेसिस पे है? On the basis of memory cells के बेसिस पे एक्टिव और पैसिव है। ठीक है, on the basis of immunity ये है, सॉरी on the basis of antibodies एक्टिव और पैसिव है। इसलिए इन दोनों को भी, उसको हम एक्वायर्ड में भी रखेंगे और एक्टिव में भी रखेंगे। ये दोनों चार्ट अलग अलग है। क्लियर? नाउ सी फर्दर। ब्यूटी हाथ नीचे करो। yes, sir. The immunity of the human body is based on memory. When the body encounters a pathogen for the first time, it reacts with a primary immune response and produces memory cells. When the body is attacked by the same pathogen twice, these memory cells offer an intensified secondary immune response. This memory of the immune system is also used as a principle in the immunization program. ठीक है, इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पहले भी इसको बोर्ड पे भी बता दिया था मैंने, यहाँ भी दिखा दिया था कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स विल ऑलवेज प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन। व्हाई? बिकॉज इन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स द ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड मेमोरी सेल्स विल डायरेक्टली कम इनटू एक्शन। इम्यूनाइजेशन में हम यही कर रहे हैं कि हमने नियरली किल्ड और नॉन एक्टिव पैथोजेंस को अपने अंदर लिया, जो हमारे अंदर किसको डेवलप कर दे रहे हैं? मेमोरी सेल्स को। और ये मेमोरी सेल्स हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। फर्दर एनकाउंटर होगा हमारा पैथोजन से तो दे विल इमीडिएटली कम इनटू एक्शन। A preparation of antigenic proteins of pathogens
or an inactive or weakened pathogen is introduced into the body as a vaccine. The antibodies produced in the body against these pathogens are then able to neutralize the pathogens during an actual infection. Vaccines generate memory. Already this I have told you that vaccines are generating what? Memory, which is of two types, B and T lymphocytes. This has been discussed how T lymphocytes helps in production of both these lymphocytes will be responsible for production of antibody. The main will be B lymphocyte. T lymphocyte will help B lymphocytes to produce antibody. This already we have discussed in the previous class. Which enables B and T cells to recognize the pathogen quickly and produce an army of antibodies in response. Sometimes when a quick immune response is required, for instance during a tetanus infection where the body is infected with deadly microbes, preformed antibodies are injected into the body. अभी ये सेम एग्जांपल वर्तिका बता रही थी कि टेटनस में हम क्या कर रहे हैं कि हम रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं. व्हाई वी आर टेकिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज? बिकॉज हियर वी नीड वेरी क्विक रेस्पॉन्स. हमें तुरंत रेस्पॉन्स चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग व्हाट? रेडीमेड, or which is also called as preformed antibodies. It's the same with snake bites, where patients are injected with preformed antibodies or an antitoxin, which is a preparation of antibodies against the snake venom. इसको कैसे बना रहे हैं भाई? पहले भी बताया, कोई बताएगा? How we are preparing antitoxin? Anybody? Raise your hand. हॉर्स में करके. हाँ, हॉर्स के अंदर हम स्नेक वेनम को डाल रहे हैं. हॉर्स की बॉडी उसके खिलाफ पहले से क्या बना देगी? एंटीबॉडी. उस वेनम के खिलाफ उस एंटीबॉडी को हमने हॉर्स से एक्सट्रैक्ट किया और हमने उसी का नाम दे दिया क्या? एंटीटॉक्सिन. This type of immunization involving preformed antibodies is called passive immunization. एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये दो वर्ड्स हो गए. पैसिव इम्यूनाइजेशन ये मेरे ख्याल से बोर्ड पे अभी जो, सॉरी नॉट ऑन बोर्ड, द थिंग विच इज अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन. आई थिंक यू ऑल might be able to understand what is available on your screen. Anybody can tell me? Raise your hand. सर रुको, raise your hand. सिर्फ एक ही बोले जा रहे हो. ब्यूटी. Anybody else? बाकी किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है? बोलो ब्यूटी, तुम ही बताओ भाई. सर इसमें ना प्लाज्मिड प्लाज्मिड से हम अपने डीएनए को ऐड कर रहे हैं, तो डीएनए लाइकेज एंजाइम का यूज किया गया है एंड यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हो रही है. करेक्ट, ठीक है. अल्टीमेटली दिस इज द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व्हिच वी हैव स्टडीड. हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम बहुत सारी वैक्सीन्स का, अगर लास्ट वाली हेडिंग याद हो तो वी हैव स्टडीड अबाउट बायोरिएक्टर्स. What was the aim of bioreactors? The aim of bioreactors was to produce the product in very large quantities. This is shown by the help of diagram. By the help of biotechnology, we are able to produce different types of vaccines in large quantity, which is also called as amplification. Technologies like recombinant DNA technology have made the large-scale production of antigenic polypeptides of pathogens from yeast or bacteria possible. The hepatitis B vaccine is produced in a similar manner from yeast. In higher vertebrates, like human beings, memory-based acquired immunity is so evolved that they can differentiate foreign organisms such as pathogens from self cells. Most experimental immunology is based on this aspect. In addition, sometimes due to genetic or other unknown reasons, the body attacks itself or self cells. See what we have listened just now, that sometimes the body can attack self cells. कभी कभी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को अटैक करने लगता है. उसके बारे में कुछ अभी यहाँ देखेंगे.
This attack damages the body and is called an autoimmune response. Autoimmune response, or it is also called as autoimmune disorders. Autoimmune disorders नाम पे ही अगर हम जाएंगे तो you will get the meaning कि our immune system is working against our own body. That is called as autoimmune disorder. An example of an autoimmune disease is rheumatoid arthritis that affects the joints. Similarly, apart from an autoimmune response, the immune response also comes into play during an allergy. Now I am stopping this option for 2 minutes. Let's come to board. Next heading is what? Many things we have studied about immunity. Next is what? Allergy. In boys section, this is already, I think it has been completed. What is allergy? So allergy can be defined as inappropriate response of immune system. Inappropriate, or it can also be called as exaggerated response of immune system. Inappropriate response of immune system. The substances which is responsible for causing allergy are called as allergens. जिनसे हमें एलर्जी होती है उसको एलर्जेंस बोलते हैं. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. मे बी कोई ऐसी चीज हो जो किसी एक पर्सन के लिए एलर्जन हो और वो दूसरे के लिए ना हो. इट डिपेंड्स ऑन द response of immune system of that particular person. वो पर्सन उस चीज के खिलाफ कैसे उसका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो उसके लिए एलर्जेंस का काम करेंगे या नहीं करेंगे. ओके, नाउ सी योर स्क्रीन. गुड एक्सप्लेनेशन इज अवेलेबल हियर. It is interesting to note that some particles in the environment, such as pollen, dust and mites. पॉलन, बहुत सारे लोगों को मैंने एक एग्जांपल बताया था कि फूलों की खुशबू से एलर्जी है, तो वहां पे एलर्जी खुशबू से नहीं है. जब वो फूल उनके पास पहुंच रहे हैं तो व्हाट हैपेंस, दिस पॉलन एंटर्स इन देयर बॉडी व्हिच कॉजेस एलर्जी. डस्ट सबको पता है, माइट से भी एलर्जी होती है, खटमल वगैरह से या जुओं से. Cause us to sneeze or wheeze for no apparent reason. This usually happens because people are allergic or sick. यहाँ डायग्राम में भी दो डायग्राम बना, दोनों लड़कियों का ही बना है भाई. इसका मतलब है कि एलर्जी की समस्या लड़कियों में ज्यादा होती है. इसका मतलब तो ऐसा नहीं है, बट ऐसा एक कॉमन तो ऐसा है कि मोस्ट कॉमनली फीमेल्स आर अफेक्टेड विद एलर्जीज. अब कुछ मेल्स में भी हो जाती है. Sensitive to these particles. This exaggerated immune response to certain antigens in the environment is called an allergy. The exaggerated immune response. Exaggerated मतलब जरूरत से ज्यादा किसी चीज के प्रति रिएक्ट कर जाना. That is called as allergy. Whereas the substances to which such an immune response is produced are called allergens. Dust, pollen, animal dander and mites are some common allergens. The antibodies produced against these allergens are usually the IgE type. इसको कहीं मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, बुक में लिख लेंगे कौन सी एंटीबॉडी इसके खिलाफ बनती है. एलर्जी में जो एंटीबॉडी बन जाती है ये IgE है. एलर्जी का टेस्ट भी कई सारे लोग कराते हैं. तो इन दैट टेस्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू detect the number of this IgE antibody. If the number of IgE is more in our blood, it means what? Ki we are having allergy for any particular thing. A runny nose, sneezing, watery eyes, and difficulty breathing are common symptoms of allergic reactions. An allergic reaction is caused by the release of chemicals like histamine and serotonin from mast cells. मैंने पहले बोला कुछ कॉपी वगैरह अपने पास रखेंगे. एक वर्ड अभी यहाँ आया, आई एम राइटिंग इट ऑन बोर्ड. मास्ट सेल्स. These are also type of WBC. Mast cells releases two main chemicals which are called as serotonin and
हिस्टामिन्स। ये दो केमिकल्स हैं जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ये हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं जो डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कॉज करते हैं। आगे भी इनके बारे में हमें पढ़ना है। Therefore, the use of drugs like antihistamine, adrenaline, and steroids quickly reduces the symptoms of an allergy. To determine the exact cause of an allergy, the patient has to either be exposed to or injected with small doses of different allergens. The patient's reaction to each allergen is studied to arrive at a conclusion. Somehow, modern-day lifestyles that border on unhealthy have lowered natural immunity and heightened our sensitivity to various allergens. जो लास्ट पॉइंट अभी बताया कि somehow the modern day lifestyle is responsible for causing allergy। जो आज की लाइफ स्टाइल है इससे हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है and that is responsible for causing allergy। क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था या इससे पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम धूप से हमारा एनकाउंटर ही नहीं होगा, डस्ट से हमारा एनकाउंटर ही नहीं होगा, तो जब वो पार्टिकल्स कभी कभी महीने 2 महीने 6 महीने में अगर हमारे बॉडी में डस्ट जाए या 2-4 महीने बाद कभी हमें धूप में बैठने का या धूप में काम करने का मौका मिले, तो इन दैट केस that particular thing will work as allergens in for our body। Already I have told you, if anybody is having allergy against any particular thing, तो हम ठीक उल्टा करते हैं कि हम उस एलर्जन से बहुत दूर जाने की कोशिश करते हैं। डस्ट से एलर्जी है तो झाड़ू ही नहीं लगाएंगे, धूप से एलर्जी है तो बिल्कुल धूप में नहीं जाएंगे। ये ठीक हैबिट नहीं है। इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम बट इट विल इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। आप उसके प्रति और सेंसिटिव होते जाएंगे। तो द बेस्ट वे इज दैट देयर शुड बी लिटिल बिट एनकाउंटर विद द एलर्जेंस which is causing allergy in our body। जिससे हमें एलर्जी है उससे थोड़ा बहुत एनकाउंटर होते रहना बहुत जरूरी है। Now see, Moreover, a protected early childhood doesn't prepare the human body for the vagaries of the environment in a metro city. Therefore, even though our environment is continually getting polluted and we are exposed to thousands of antigens every day, it is a combination of the body's immunity and a vaccination program based on immunization principles that help us combat infections and diseases। ठीक है, यहाँ लास्ट में कुछ बता रहा था कि हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड है उस वक्त हर कोई अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद ये बताया कि ऑल्दो चारों तरफ बहुत पॉल्यूशन है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बट इसके बाद भी हमें वैक्सीनेशन और इनसे इनकाउंटर होके अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाना चाहिए। मतलब हमें खुद को बहुत ज्यादा एक्सपोज होने से बचाना नहीं चाहिए। क्लियर? The human immune system works as an armor against infections and diseases. It helps the body distinguish between non-self cells like bacterial, fungal, and viral pathogens from self cells. The immune system responds to non-self agents and remembers them. It also plays an important role in reacting to allergens, organ transplantation, as well as autoimmune responses. The human immune system consists of lymphoid organs. Now we are moving on to the next topic, that is lymphoid organs, that is available on page number 153. Everybody open page number 153. On page number 153 you can see the last heading, which is lymphoid organ. What is available in your book? These are the organs where origin or maturation and proliferation of lymphocytes occur. Lymphocyte means what? Anybody? ब्यूटी बोलो, तुम्हारा माइक अनम्यूटेड है। That's a type of WBC। Lymphocyte is a type of WBC which helps in production of antibody। तो lymphoid organs से lymphocytes बनते हैं। The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate। Now see in this it will be available. It is very simple heading. Lymph nodes,
and lymph cells called lymphocytes. The lymphoid organs are where lymphocytes originate, mature, and proliferate. Originate, mature and proliferate. जहां पर lymphocytes mature होंगे, that parts are called originate होंगे, mature होंगे, that organs are called as lymphoid organs. lymphocyte से ही lymphoid बन गया. Lymphoid organs can be classified as primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. See it very carefully. ये हमारा immune system का main part है, primary and secondary lymphoid organ. Bone marrow and the thymus are two primary lymphoid organs. Bone marrow and thymus. On this name, I have told you that B cells have been named on the basis of bone marrow and T cells have been named on the basis of thymus. It has come from the alphabet B and T. Bone marrow is a flexible tissue found in the hollow interior of bones where all blood cells, including lymphocytes, are produced. कई बार मैंने बताया है, पूछा भी है कि बोन मैरो क्या होता है. इस डायग्राम में एक बार और देखेंगे, 2 सेकंड पहले मैं कर रहा हूँ. बोन मैरो कहाँ पर प्रेजेंट है, पहले भी हमने जाना है कि जितनी भी हमारी बॉडी की बड़ी बोन्स है उनके बीच के हॉलो स्पेस में बोन मैरो बनता है. Organs. Bone marrow is a flexible tissue found in the hollow interior of bones where all blood cells, including lymphocytes, are produced. The thymus, on the other hand, is a lobed organ which is located near the heart and beneath the breastbone. The thymus, which is quite large at birth, shrinks in size with an increase in age. By the time a person reaches puberty, the thymus shrinks considerably. Both bone marrow and the thymus provide the environment for the development and maturation of T lymphocytes. Bone marrow and thymus is providing place for maturation of T lymphocytes. Not only T, B and T, both lymphocytes. It is in these two organs that immature lymphocytes differentiate into antigen-sensitive lymphocytes. यहाँ देखेंगे बोर्ड पे कुछ लिखा है स्क्रीन पे, हीमोसाइटोब्लास्ट. क्या लिखा है, स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो. बोन मैरो के जो सेल्स हैं हीमोसाइटोब्लास्ट. ओके, प्रोसेसिंग इन थाइमस एंड प्रोसेसिंग इन टॉन्सिल्स, पियर पैचेस एंड अपेंडिक्स. यहाँ पर जो बन गया थाइमस में दैट इज टी लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पर जो जिनका प्रोसेसिंग हुआ ये डेवलप हो गए बी लिम्फोसाइट्स. ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे बोन मैरो के. When lymphocytes mature, they move to the secondary lymphoid organs such as the spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches in the small intestine, and appendix. इन सबका लोकेशन स्क्रीनशॉट कर लेंगे. पियर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, स्प्लीन भी स्टमक के पास है, टॉन्सिल सबको पता है, लिम्फ नोड सिर्फ यहाँ नहीं है, लिम्फ नोड्स बॉडी में बहुत सारे जगह पे होंगे. पूरे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, इन द सेम वे आवर बॉडी कंटेन्स लिम्फेटिक सिस्टम. इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में जगह जगह पर गांठ जैसा स्ट्रक्चर होगा विच इज कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स. अपेंडिक्स को हम बहुत सारे जगह पे वेस्टिजियल ऑर्गन के भी रूप में मानते हैं, बट इट प्लेज सम रोल इन आवर इम्यूनिटी, इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी बाय वर्किंग एज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन में आके प्रेजेंट रहते हैं. See it once again. Such as the spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches in the small intestine, and appendix. It is inside the secondary lymphoid organs that lymphocytes interact with antigens and proliferate to form effector cells. ध्यान से देखेंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर लिम्फोसाइट्स एंटीजन से इंटरैक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, इफेक्टर सेल्स. नाम पे जाएंगे, इफेक्टर सेल्स यही असली सेल्स होंगे जो मारने का काम करेंगे. एक बार और इसको देखिए, 2 सेकंड पहले का वीडियो. That lymphocytes interact with antigens and proliferate to form effector cells. The spleen is a large bean-shaped organ located in the upper left part of the abdomen
protected by the rib cage. It chiefly contains lymphocytes, erythrocytes, and phagocytes. It acts as a large reservoir of blood to be supplied in times of emergencies like hemorrhagic shock or excess loss of blood due to cuts or injuries. कहीं पर भी अगर हमें ब्लड की जरूरत ज्यादा पड़ती है किसी भी रीजन से, तो उस केस में हमारे बॉडी का ये पार्ट द स्प्लीन कम्स इनटू रोल. The major role of spleen is to provide blood to any part of the body from where sudden or from where blood loss has taken place. This spleen contains lymphocytes along with blood cells, which includes RBC. इसमें lymphocytes में spleen में lymphocyte बहुत ज्यादा होते हैं और RBC भी ज्यादा होते हैं. It is present near our stomach. It also plays the role of an RBC. यहाँ पर देखेंगे तो मुझे लगता है कि फैगोसाइटिक सेल्स का नेचर को दिखा रहा है. देखते हैं क्या है. Graveyard by removing old or damaged RBCs from the body. फैगोसाइटिक सेल को दिखा रहा है कि कैसे स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं. राइट डाउन समवेयर हाउ इट इज वर्किंग. तो